Okay, so in this lecture we will discuss about subspaces of a vector space, है ना। किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट जो है वो सबस्पेस कब कहलाता है? इफ इट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम ऑपरेशंस, है ना, सेम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो कि वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइंड है, तो उसको हम सबस्पेस कहते हैं। तो लेट अस डिफाइन सबस्पेस। स्पेस, तो लेट बी एफ, है ना, वेक्टर स्पेस ओवर एफ be a vector space a non-empty set or non-empty set subset of V, W of V is said to be a subspace, a subspace of V if W itself, if W itself is a vector space over the same field F, over F with the same vector addition, and scalar multiplication. Multiplication as for V, जो V के लिए हमारे पास ऑपरेशन थे, सेम ऑपरेशन फॉर द सबसेट आल्सो। ओके, तो एक चीज क्लियर है कि हमारे पास जो भी ऑपरेशंस हैं हमारे पास सब वेक्टर स्पेस की, उस सारी चीजें फुलफिल हो रही है किसके पास, सबसेट के ऊपर भी। यही कैन से सबसेट के अंदर भी। तो यू कैन जैसे कुछ रिमार्क हैं, जैसे कि प्रॉपर सब स्पेस किसे बोलते हैं और इम्प्रॉपर सब स्पेस किसे बोलते हैं। तो एक रिमार्क करके आप लिख लीजिए ताकि आपको चीजें ध्यान रहें। नंबर वन, दैट की फॉर एवरी वेक्टर स्पेस, फॉर एवरी वेक्टर स्पेस V, the entire space is also the, you know, that the subset of V, and that is also called the सबस्पेस, है ना, उसको भी हम सबस्पेस बोलते हैं। और अगर हम सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं, सिंगलटन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, तो वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये तो ऐसे हैं जो कि ट्रिवियल सबस्पेसेस होते हैं, मतलब ये एग्जिस्ट ही करते हैं, तो इनको हम प्रॉपर बोलते हैं। तो लेट अस राइट हियर कि इम्प्रॉपर जो है तुम्हारे पास सब स्पेसेस कहलाते हैं, इवन दो कि हमारे पास जो वी है इटसेल्फ को छोड़कर वो सारे प्रॉपर कहलाते हैं, है ना। किसी किसी बुक्स में ऐसा है, बट यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं कि जो वी है और जो सिंगलटन जीरो लेकर जो हमारे पास सब स्पेस बन रहा है, दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर, एंड अदर देन दिस आर द प्रॉपर सब स्पेस। So the entire space V, the entire space V and zero space, it will have only zero element, or always
subspaces of V, you know that, of V, and are called improper subspaces. So all subspaces other than these two are called proper subspaces. तो मोस्टली वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर सबस्पेसेस, बिकॉज ये तो दोनों होते ही होते हैं, तो इनके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस पहले से है। और आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर भी अगर हमारे पास कोई सब वेक्टर स्पेस बन रहा है तो उसका भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए इनको हम ट्रिवियल बोलते हैं। तो अगर हम कभी सब स्पेसेस अगर हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली वी आर टॉक अबाउट द प्रॉपर सब स्पेसेस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। और क्लियर, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू सबसेट है और वो सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो सारी चीजें यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि फ्रॉम द सेट V it is clear that that in any subset W of V the associativity of addition and commutativity of addition and the four properties of scalar multiplication always satisfied। अगर हम बात करें कि हमारे पास कैसे कोई सबसेट सब स्पेस बन रहा है, तो हमें पता है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं सबसेट के, वो V के ही एलिमेंट्स हैं। तो V के सारे एलिमेंट्स के अंदर वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चार प्रॉपर्टी थी वो तो सेटिस्फाई कर ही रही है, तो इसका मतलब उस सबसेट के ऊपर भी सेटिस्फाई करेंगे अगर हम उन ऑपरेशंस को लेकर करते हैं। एसोसिएटिविटी हमारे पास ऑपरेशन बेस्ड होती है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, कम्पिटिटिव होल्ड करेगी, है ना। एंड if we talk about, so out of 10 properties of the vector space the 6 are always satisfied to every subset, है ना। ये जो चार प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई चार वाली, और तुम्हारे पास एसोसिएटिव कम्पिटिटिव, कोई भी सबसेट क्यों ना ले ले, वो ये छह प्रॉपर्टी तो होल्ड करनी ही करनी। तो जो रेस्ट तुम्हारे पास बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उस सबसेट के ऊपर हमें चेक करना होगा, है ना, कि रेस्ट जो तुम्हारे पास की एडिशन का क्लोजनेस, है ना, एसोसिएटिविटी तो खैर हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पर मौजूद है, और एडिटिव इनवर्स को भी देखना होगा, वहां पर एग्जिस्ट है। तो ये चार प्रॉपर्टी, और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है कि नहीं, ये चार प्रॉपर्टीज हमको और देखनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्स प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हर एक सबसेट पे एग्जिस्ट करती है। तो चार प्रॉपर्टीज हमको देखनी पड़ेगी, और उन चार प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम और कोइंसाइड कर लेते हैं, और हम उनकी कुछ रिजल्ट्स थ्योरम बना लेते हैं, जिनके ऊपर हमें चेक करना होता है कि कोई सबसेट हमारे पास वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, या यू कैन से कि वो सब स्पेस है कि नहीं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में आपको रहना चाहिए, इसलिए लिख लीजिए। सेकेंड रिमार्क, इट इज क्लियर, it is clear that any subset W of V associativity of addition, commutativity, commutativity and of addition commutativity, ये तो जो है ऑपरेशन बेस्ड तुम्हारी प्रॉपर्टीज होती है। एंड फोर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
scalar multiplication are always satisfied. तो वी कैन से कि हमारे पास जो ये 6 प्रॉपर्टीज है ना, 4 ये और वो एसोसिएटिव और कम्पिटिटिव मिला के 6 हो गई, तो यू कैन से कि दिस हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए होती है। तो यू कैन से दिस इज out of 10 properties, out of 10 properties of a vector space, 6 are always satisfied. Six are always satisfied in every subset. कोई कोई भी सबसेट क्यों ना ले लो, तो ये तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमको जो चेक करना है वो ड्रेस जो 4 प्रॉपर्टीज होती है उनके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें देखना होगा। सो टू प्रूव, you can write here, so to prove W a subspace, W a subspace, our main emphasis हमें देखना है कि हमारे पास किस पे फोकस होगा, जो 4 प्रॉपर्टीज बची हुई ऑन द 4 रिमेनिंग प्रॉपर्टी। तो हमें कभी सब कोई सबसेट है उसे हमें सब स्पेस प्रूव करना है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास उतने चीज पता हो जाएगा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो रिमेनिंग हमारे पास बची, एक तो क्लोजनेस ऑफ एडिशन है ना, क्लोजर ऑफ एडिशन, existence of additive universe, and sorry, existence of additive universe, ये you can say additive identity पहले लिखो, existence of additive universe and existence of additive identity, additive identity क्लियर। तो additive identity एग्जिस्ट करे, additive universe एग्जिस्ट करे, एंड जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर ऑफ ओके। तो दिस इज टू रिमार्क इट्स मेन बिकॉज वी नो अबाउट इट। तो 4 प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करना है मेनली, जो हमारे पास अगर किसी भी सबसेट को हमें सब स्पेस दिखाना है। एक डिफिनीशन लिखते हैं, दैट इज डिफिनीशन ऑफ disjoint subspaces. What are the disjoint subspaces? Disjoint subspaces. So let the vector space V or F be a vector space so two subspaces W1 and W2 of V are said to be disjoint if their intersection is a zero subspace
मतलब केवल जीरो एलिमेंट कॉमन हो दोनों में, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम डिसजॉइंट सब स्पेसेस बोलते हैं। तो दिस W1 intersection W2 is only we have zero element in it। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, कि जब हम सब स्पेसेस की डिसजॉइंट की बात करते हैं तो वी हैव, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट W1 में भी वही होता है और W2 में भी वही होता है, एंड अदर एनी अदर एलिमेंट विल बी नॉट सेम, मतलब कोई भी एलिमेंट और मैच नहीं करता या कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है। तो जब सब स्पेसेस के हम डिसजॉइंट की बात करते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो इम्पटी नहीं, इट हैज वन एलिमेंट, ठीक है, दैट इज योर जीरो या आइडेंटिटी एलिमेंट। जब हम सेट की कोई दो सेट है और उनके डिसजॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है, इट मींस दैट कि देयर इज नो एलिमेंट इज कॉमन। तो अगर सेट की डिसजॉइंट की बात करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। जब हम वेक्टर स्पेस के अंदर सब स्पेसेस की बात करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी हैव अ सिंगलटन एलिमेंट, दैट इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज योर जीरो। क्लियर? तो ये एक डिस्टिंक्शन क्लियर होना चाहिए। तो इसको लिख लीजिए रिमार्क के तौर पे, ताकि आपको याद रहे, समझ रहे कि मान लो डिजॉइंट लिखा है तो वन एलिमेंट तो इज देयर इन सब स्पेसेस। तो लेट्स राइट अ रिमार्क, तो आपको सीधे, तो by two disjoint, you can say to disjoint sets, अगर हम कह रहे हैं कि दो सेट्स डिसजॉइंट है ए एंड बी, तो हम कह रहे हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो इम्पटी है, वी मीन दैट their intersection is empty, that institution should not be mixed up, be mixed up with the definition, है ना, ये चीजें आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए कि डिसजॉइंट जो वर्ड है उससे आपको, हम्म, तो डिसजॉइंट का मतलब सेट के लिए डिफरेंट होता है और सब स्पेसेस के लिए डिफरेंट होता है, तो डू नॉट मिक्स द थिंग्स एंड दिस इज नॉट अ सेम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफिनीशन ऑफ अ सब स्पेस। अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कब हमारे पास कोई भी सबसेट हमारा सब स्पेस होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट सब रिजल्ट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया ज्योति? सर ये डिसजॉइंट्स का एक बार फिर से बताइए ना। क्या चीज? सर ये डिसजॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है एक बार। डिजॉइंट मतलब डिजॉइंट सब, मतलब डिजॉइंट अगर सब स्पेसेस कह रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन जो है केवल और केवल हमारे पास जीरो कंटेन करता है, जीरो तो होगा ही। आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो भी वेक्टर स्पेस है ना, तो इसके अंदर भी जीरो होगा, इसके अंदर भी जीरो होगा, तो वो तो कॉमन मिलना ही मिलना है ना। इवन दो डिसजॉइंट की डेफिनेशन तो ये है कि दो सेट डिसजॉइंट होगा, कोई यस भी सर। एलिमेंट कॉमन ना मिले। बट सब समझ स्पेस, गए। हाँ, बट सब स्पेसेस में ऐसा हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सब स्पेसेस जब हम ले रहे हैं तो वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वो यूनिक होता है, और वही होता है जो वेक्टर स्पेस का होता है, तो दोनों में वो एलिमेंट होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए हम उसे डिसजॉइंट जरूर बोल रहे हैं, बट वी हैव वन सिंगलटन एलिमेंट। और बट सेट के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर देयर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी। ओके, तो वो दिमाग में, मतलब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि देयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन।
for the disjoint of the subspaces. Clear? Okay, Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो कुछ रिजल्ट की बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं. That is your number one, unnecessary and sufficient condition. Unnecessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space a necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space V to be subspace of V of V is that. पहली बात तो ये एडिशन के साथ क्लोज्ड हो, है ना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोज हो. बस दो ही चीज अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो उससे हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि वो जो सबसेट है दैट इज अ सबस्पेस. ठीक है, तो इज दैट W is closed under addition and scalar multiplication. And स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो दिस इज द एक सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V to be a subspace of V if W is closed under addition and scalar multiplication. अगर इतनी सी बात है तो, और ये कंडीशन कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट, है ना. अगर हमारे पास वो सबस्पेस है तो नेसेसरी ऐसा पॉसिबल होता ही कि वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बट इट इज सफिशिएंट टू कि अगर हमारे पास वो हम इतना प्रूव करने में सक्षम हो जाए. बाकी तो 6 प्रॉपर्टी तो थी ही थी, ये 2 प्रॉपर्टी और इन 2 प्रॉपर्टी की मदद से अदर जो 2 प्रॉपर्टीज है उनको भी प्रूव किया जा सकता है. ओके, तो दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. सेकेंडली इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर लिखें इसी रिजल्ट को, तो unnecessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace of V is that this is A into U plus the V, it's belonging to W for all U comma V is belonging to capital W, and this is A from capital. So this is you can say कि वन लाइन अगर हम ऐसा प्रूव करने में सक्षम हो कि हमारे पास A इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया है
और दिस इज वी, यू और वी आर द वेक्टर्स एंड ए द स्केलर। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमने लिखा है, दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अगर ये डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है। ठीक है, इनको सेपरेटली भी हम देख सकते हैं। थर्ड लिखते हैं प्रूव करने का। ये सारे रिजल्ट्स हैं जो जिससे हम सब स्पेस को प्रूव कर सकते हैं, कोई भी एक इनमें से हम यूज कर सकते हैं। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट conditions for a non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace नंबर वन, ये हमारे पास इसका जो डिफरेंस है दैट इज टू यू माइनस वी इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल u comma v इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एंड दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, a into u इज बिलोंग्स टू w for all a is belonging to f and u is from capital W. Clear? So this is necessary and sufficient conditions for the non-empty subset W of a vector space V to be a subspace। तो ये हमारे पास एक तो difference should be in W and this is A into U will be in W। एक और लिखते हैं जो प्रूव करने के लिए सेम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। sufficient condition for a non-empty subset W is a vector space of a vector space, let's say of a vector space VF be a subspace of V is that similarly that will be, अगर यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए यू, मतलब ये भी एक तरीका है प्रूव करने का। बाकी जो फर्स्ट टू है हमारे पास वो सबसे बेनिफिशियल है। ए यू प्लस का बी बी is belonging to W for all U and V belong U and V belongs to W and A and B is the element from field F. So these are four results that can prove us कि प्रूव करते हैं कि कोई भी सबसेट हमारे पास सब स्पेस है कि नहीं। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम लोग जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे वो फर्स्ट टू यूज करेंगे। एक तो हम ये एडिशन को दिखा देंगे कि एडिशन इज क्लोज, जो W है वो एडिशन के साथ क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इट मीन दैट कि हमको ये प्रूव करना होगा कि दिस A प्लस B is belongs to W and this is sorry not A। अगर हम U ले लेते हैं ना, U और V, तो एक मिनट,
तो इट मीन्स जो फर्स्ट वाला है ना उसको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है, अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं एनी टू वेक्टर्स यू एंड वी, दैट इज आल्सो इन डब्ल्यू, और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये भी डब्ल्यू। ये हमारे पास फर्स्ट को बोल रहा है कि अंडर एडिशन इट इज क्लोज एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और सेकेंड, ये दो रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे मोस्टली टाइम अपने सबसेट को वेक्टर स्पेस सब स्पेस प्रूव करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, दैट इज योर फिफ्थ रिजल्ट, कि intersection of two subspaces of a vector space V is again a subspace of V. You can write here the intersection of two subspaces of a vector space is again a subspace of okay. Sixth one, you can just write sixth one, the intersection of an arbitrary family अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं तो दैट इज आल्सो a subspace. So this is an arbitrary family of subspaces of a vector space which again a subspace of that vector space. ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट है कि यूनियन के ऊपर, तो यूनियन of two subspaces need not to be a subspace, है ना? You can just write it, the union of two subspaces of a vector space VF may not be a vector space. Be a subspace of this vector space V. ठीक, यूनियन हमारे पास कब होता है, दैट इज योर इट्स ओनली when the subsets is contained to one in, मतलब एक किसी दूसरे में कंटेन्ड हो या एक दूसरे का सबसेट, then you can say the union of two subspaces is a subspace if and only if one is contained in the other, एक दूसरे में वो कंटेन्ड हो, अगर ऐसा है तो वो हमारे पास एक किसी दूसरे में कंटेन्ड हो, तो एटलीस्ट वन इज देयर। तो टू ऑफ द सबस्पेसेस तभी हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो सबस्पेस होगा, अदरवाइज है ना, इफ एंड ओनली, और यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। ठीक है, तो दैट इज मस्ट कि वन इज कंटेन इन अनदर। ओके, चलिए एक
ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कुछ सब स्पेसेस के, जो कि हमारे पास प्लेन के अंदर होते हैं या फिर स्पेस के अंदर होते हैं। उनको जरा देख लेते हैं। तो ये नाइन्थ रिजल्ट दैट इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब स्पेसेस। We have time 3 minutes, so let's quickly write these things. Geometrical interpretation of subspaces of R3. So let us write these two. First is the line. So I'm just writing a line. So a line in the space R3 is a subspace if and only if एक लाइन तुम्हारे पास सब स्पेस होगी अगर ये ओरिजिन से पास हो रही। इफ इट पासेस थ्रू, लाइन का मतलब वो लाइन के जो पॉइंट्स है उनका जो कलेक्शन होगा दैट इज सबसेट ऑफ R3, वो एक सब स्पेस बनाता है ना। दिस इज passes through the origin। origin, ठीक है। So if you are writing like this is further we can see कि हमारे पास the points of like this x comma y comma z, this is from R3 such that this is your two planes intersecting, we get a line y plus का c1z is equals to 0 and this is your a2x plus the b2y plus the c2z is just equal to 0. So this is passes from the origin, which a mathematical representation. ओके, तो सेकेंड प्लेन जो होता है वो भी हमारे पास होता है, वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। अ प्लेन इन द स्पेस R3 is a subspace if and only if it passes through the origin। Just writing further, if you're just writing the in the form of set, this x y z is belonging to R3 such that this is your